Hello everyone, my name is Upendra Verma and welcome to the Infinity Learn by the Sri Chaitanya. So today we will discuss about the motion in a straight line. Okay, so particularly we will focus on practice lecture. Okay, because this is the practice lecture, so we will discuss more number of the questions and some concepts also. अगर बीच में आपको कोई इस तरह के doubts हो गए little bit कुछ formulae कुछ concept में, so in 1 or 2 minutes we will discuss, but our main target is to discuss problems. Okay, ठीक है. So let's start with the first question. Okay, so first read the question. A car start with a constant acceleration. Oh, sorry. Okay, good. Okay, so a car start with the constant acceleration 2 meter per second square at time t equals to 0. That means initially t equals to 0, 2 coins are released from the car at t equals to 3 seconds and t equals to 4 seconds. Suppose this is the point origin from body start moving. Okay, each coins take exactly 1 second to reach the ground. Okay, when the coins hit the ground, they stick to it. The separation between the two coins on the ground will be. Okay, ठीक है. So suppose this is the line of motion of the body. T equals to 0. After t equals to 3, it will cover some length. Yes. And now this is t equals to 4. T equals to 4 seconds. Okay. Start from here to here. So what will be the velocity v1 after 3 seconds? So we know that according to equation of motion first, v equals to u plus at. So v, suppose this is v1. So this is v1. v1 equals to 0 plus a. A means 2, t means 3. That is 6 meter per hour. 6 meter per second. Okay. Oh. 6 meter per second. Now, when the coins is released, अब देखिए, अगर यहां से coins रिलीज होता है, that means there is no force in horizontal direction. Only force is vertical direction, that is gravitational force. So it will move like this. Why? Because you know because of the gravity it will fall down with the increasing speed, but horizontal direction में कोई force नहीं है. ठीक है. So this will follow a parabolic path. तो क्या होगा, ये parabolic path cover करेगा. So this is velocity v1 equals to 6 meter per second. Now at t, suppose t equals to 4 here, t equals to 4. So velocity will be, what will be the velocity? v2 equals to 0 plus 2 at. A means 2, t is 4. So 8 meter per second. Okay, 8 meter per second. Here v2 equals to 8 meter per second. And this will also follow this parabolic path. So now suppose this is 1 and this is 0.2.
So we need to find this length. Okay, so first of all, find this length in horizontal direction. In horizontal direction, velocity is constant. So suppose s1 equals to 6 meter per second into 1 second, that is 6 meter. This is 8 velocity. So s2 equals to 8 into 1, that is 8 meter. But when you draw this point, so we don't know this length. Okay, we know the length. This one is the 6 meter, but ये वाली length हमें नहीं पता है, तो we can just find out the this length. This is v2, v1. So we know that v2 square equals to v1 square plus 2a, suppose x. Okay, according to equation of motion third वाला, तो क्या होगा यहाँ पे 864 minus 36 equals to 2 into 2 into x. Any doubt? No. So x equals to 64 minus 33, 64 minus 36. So आपका हो जाएगा 8 to 28 divided by 4, that is 7. X equals to 7. तो आप देखो, you can see here, this length is 7 meter, this length is 6 meter. So this length will be 1 meter. अब देखो, this is point number 1. This is point number 1 and this is point number 2. So this length 8 meter and 1 meter. Total is 9 meter. Total length is 9 meter. ठीक है? Okay, this is 9 meter. Okay, now move to the next question. Question number 2. Okay, a ball is released from the top of the tower of height h. Suppose this is the top of the tower with the height h. Okay, just draw this one. H. It takes time t to reach the ground. Time taken by capital T. What is the position of the ball from the ground after t by 3 seconds? Time t by 3. So suppose this is time t by 3. Body covers some h dash length or height. So very simple. According to equation of motion third, s equals to ut plus half a t square. U is the initial speed or velocity, a is the acceleration, t is the time. So total height h u 0 0 into 2 is 0 plus half g t, that is capital T square. So h equals to half g capital T square, equation number first. Okay. Now in t by 3 seconds, suppose h dash, it will cover h dash. So 0 plus half into g t by t divided by 3 whole square equals to g by 2 into t square by 9. And we know g upon 2 into t square equals to h. G into t square by 2 equals to h. So h upon 9 h dash. But the height from ground. So this length is h dash equals to 9 by, h upon 9. Okay, h by 9. This length is h upon 9.
So what will be this length? Suppose this is x. So h minus h upon 9, 8 h by 9. Okay. Option C. Option C is the correct one. Uh, 1 minute, full screen. Option. Just wait a minute. One minute, just wait. Mm, 1 minute. Okay, so continue with this one. So because यहाँ पर full screen option नहीं. Just wait a minute. Sorry. Okay. Sorry for inconvenience. Okay, so a body is moving with a constant speed. A body is moving with a constant speed in a circle of the radius 10 meter. Okay. So suppose this is the circle, okay, of radius 10 meter. Okay. The body completes one revolution in just
4 seconds. Means it will complete move the circle, start from suppose O and reach to O in 4 seconds, and velocity speed is constant. At end of the 3 seconds, the displacement of the body from its starting point. Okay, so देखो, clearly we can say that if divide this circle in 4 parts and speed is constant, so that means uniform motion means 1 second here, 1 second complete here, 1 second and 1 second. Okay, so after 3 seconds, it will reach to point, this point P. Okay, this point P. So what will be the displacement? And we know what is distance and displacement. Distance can be defined as the total length covered by a body, whereas the displacement can be defined as the shortest length between final, between this is final, this is initial. So shortest length between the final and initial. Okay, we know that this is 10 meter, so this is also radius 10 meter. According to Pythagoras theorem, suppose this is distance capital D. So capital D square equals to this radius plus the r square plus r square. Very simple formula we know from class 6. क्लास 6 से ये सारी चीजें हम देख रहे हैं. So D equals to under root r plus r square. R square that means 10 square plus 10 square. So 2 times into 10 square. Simple. 100. 10 square means 100. Come out from the root 10 root 2. That is in meter. So displacement is 10 root 2. 10 root 2. A problem? No. Okay. So now move to the next question. A particle is constant. A particle is constrained to move on a straight line path. It returns to the starting point in after 10 seconds. Okay. Suppose this is starting point O. Constrained to move on a straight line. This is a straight line. Suppose this is point P. In 10 seconds, it comes to initial point O. O to P and P to O in just 10 seconds. The total distance covered by a particle during this motion, this time is 30 meter. अब देखो क्या हो रहा है, ये यहाँ से मूव किया and then come to this point also. So अगर 30 meter मूव किया तो 15 meter ये गया and then comes to 15 meter also. So 15, 15, 30. Which of the following statement about the motion of the particle is false? So हमें क्या choose करना है? Which one is the false statement? Displacement of the particle is 0. So what will be the displacement? अभी मैंने बताया displacement is nothing but the shortest length between the final and initial point. तो final यही था, initial भी यही था. So displacement is 0. Yes, correct. But we need to find false. तो ये हमारा option नहीं होगा. Now move to the next one, that is average speed of the particle is 3 meter per second. So what is average speed? What is average speed? आप देखो average speed, ये formula पता होना चाहिए आपको. Average speed is equals to total length or speed, total distance upon total time taken. Time taken. ठीक है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन. अब टोटल डिस्टेंस कितना है 30 मीटर. 30 मीटर देखो टोटल लेंथ कितना होगा आपका 30 मीटर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दिस इज 10. So 30 divided by 10, 3 meter per second. So this is also correct. But we need to find out false statement.
ठीक है। अब देखो डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल इज 30 मीटर, distance of the particle is 30 meter, not displacement. Displacement of the particle is 0. Okay, but here given 30 meter. So option C is the correct one. ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ, बट आपको खुद क्वेश्चन करना तो एक बार रीड कर लो, सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। 2 सेकंड, मैक्सिमम 2 to 3 सेकंड में आपको क्या मिल जाएगा आंसर। ठीक है, बोथ ए एंड बी, यस बोथ ए एंड बी इज करेक्ट, दैट मींस वी नीड टू फाइंड आउट फॉल्स। सो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा, ओनली ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके। टू ट्रेन आर ईच 50 meter long, moving parallel towards each other at a speed of 10 meter per second and 15 meter per second respectively. Okay, at what time will they pass to each other? अगर देखो आप, टू ट्रेन है, वन ट्रेन, अनदर ट्रेन, टू ट्रेन मूविंग, टू ट्रेन मूविंग। ओके, अब देखो क्या हो रहा है कि दे पास टू ईच अदर, सो 10 meter per second, 15 meter per second coming towards each other। अगर मैं इसको रेस्ट पे रखूं, सो दिस विल कम एंड पास इट, तो यहां से ये इसको पास हो जाएगा। सो कितना मीटर लेंथ कवर करेगा ये दोनों, दोनों का कितना लेंथ है 50 मीटर एंड 50 मीटर। अगर इसको मैं इस डायरेक्शन में 10 दे दूं, 10 मीटर पर सेकेंड, इसको भी 10 मीटर पर सेकेंड, जस्ट ट्रिक टू सॉल्व। तो ये कितना हो जाएगा रेस्ट पे 0 एंड ये कितना हो जाएगा 25 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से आप देखोगे तो आपको इजी लगेगा। ये रेस्ट पे हो गया, 50 मीटर ये, 50 मीटर ये, दोनों क्या होंगे क्रॉस करना है, तो टोटल लेंथ 100 मीटर। अब देखो यहाँ पे एट व्हाट टाइम, सो टाइम इक्वल्स टू लेंथ, लेंथ कितना हो जाएगा 50 प्लस 50 डिवाइडेड बाय स्पीड। ये तो मैंने क्या किया, अगर 10 दोनों की वेलोसिटी देते हो तो 0, 25 कितना हो जाएगा 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में क्या हो जाएगा, वो ट्रेन इसको पास। यस, व्हेन टू बॉडी अप्रोचिंग इट इच अदर, तो उसमें उस कंडीशन में क्या होता है, वेलोसिटी वी विल ऐड वेलोसिटी, बट अगर यही दोनों वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, 15 मीटर पर सेकेंड, अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में मूव करते, ओके, तो क्या होता है इस कंडीशन में वी सब्ट्रैक्ट, सो रिलेटिव मोशन क्या होता है इसमें डिफरेंस। ओके, सो 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, ठीक है, सो आपका बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, if the particle is moving along a straight line given by a relation x equals to 2 minus 3t plus 4t square, where s is in centimeter and t is in second, its average velocity during the third second, that means क्या होगा, देखो ये सपोज 2 सेकेंड में हो गया, ये हो गया टोटल 3 सेकेंड में, सॉरी 3 सेकेंड में, तो ये जो लेंथ होगा किस में होगा, थर्ड सेकेंड। ओके, थर्ड सेकेंड। अब देखो सपोज इन 2 सेकेंड, सो x assume 2, so 2 minus 6, 3 into 2 6 plus 2 cube 8 32, okay 32, so 6 minus 2 4, 32 28, x2 is
28. Okay, this is 28. Now x3. X3, that means distance in 3 seconds. So 2 minus 3 into 3, 9 plus 2 minus 3 into 3, 9 plus 3 cube, 27 plus 4, 27, sorry, into 4, 8, 10. Yes, 2. ठीक है. Okay. So 7, this is minus 7, 101 meter x. ठीक है. अब ये देखो क्या है कि 3 सेकेंड में, ये 2 सेकेंड में. सो थर्ड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस इन, सपोज थर्ड सेकेंड डिस्प्लेसमेंट इन थर्ड सेकेंड कितना होगा? 101 माइनस 28. ठीक है. सो इसमें कितना हो जाएगा? 73 मीटर. अब क्या पूछा है देखो, सिंपल सिंपल. The average velocity during the third second. Average velocity means average velocity displacement displacement upon time. देखो डिस्प्लेसमेंट कितना है? 73 डिवाइडेड बाय 1. थर्ड सेकेंड मतलब 1 सेकेंड, 73 मीटर पर सेकेंड. सॉरी, सेंटीमीटर पर, बिकॉज एवरीथिंग इज गिवन इन सेंटीमीटर. ठीक है, अगर मीटर में होता तो 73 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, गॉट इट? कोई डाउट तो नहीं है? ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. A person traveling in a straight line moves with a constant velocity v1. Constant velocity v1 for a certain distance of x. With a constant velocity v2 move equal distance. अब देखो, suppose this is x. Okay, velocity कितनी है? v1. Another with velocity v2 for equal distance, x with v2. Okay, the average velocity means, देखो एक फॉर्मूला, देखो कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले क्या करना चाहिए कि आपको फॉर्मूला एक बार को लिख लो, which we are going to use the formula. उससे क्या होता है, what we need to find out, क्या हमें फाइंड करना है, ये चीजें मिल जाती है हमें. So average velocity equals to total displacement. Total displacement upon total time. So what is total displacement? Straight line है, so this is moving in straight direction. So x plus x क्या हो जाएगा? 2x total displacement. Total time. Suppose this is time t1, this is time t2. So total time t1 plus t2. Yes or no? Now 2x total displacement divided t1. What is t1? T1 is x upon v1. X upon v1 plus t2 is x upon v2. Okay, common x common. This is one, sorry, this is v upon 2. So v upon 2 equals to 1 minute, just wait a minute. We need to cross multiply. Okay, so 1 upon v1 plus 1 upon v2 equals to, this is 2, this is v, this is 2. So 2 upon
दिस इज द रिलेशन. फाइंड आउट दिस रिलेशन. देखो कोई रिलेशन इसमें देखो, 1/v1, 1/v2, 2/v. Option C is the correct one. Option C is the correct one. Okay, समझ में आई बात? Okay, now move to another question. कोई doubt? Anyone have any doubt? The distance moved by a freely falling body start from the rest during first second, third, that is nth second of the motion are proportional to free falling. So in free falling, what is the acceleration? Acceleration A is the acceleration due to the gravity. Okay. Okay. In nth second. So suppose this length is covered in n time, and t equals to, sorry, 1 minute. N second. Suppose this is Sn and this length is Sn minus 1. मान लो कि ये 5 मिनट सेकेंड में हो गया, ये 4 मिनट, तो कितना टाइम हो जाएगा? n minus 1 सेकेंड. यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन फाइंड आउट Sn इक्वल्स टू डिस्टेंस मूव बाय फ्रीली फॉलिंग. सो इनिशियल वेलोसिटी क्या करते हैं? u इक्वल्स टू 0 एज्यूम कर लेते हैं. ठीक है. सो ut 0 प्लस हाफ g t स्क्वायर. t मीन्स n, so n स्क्वायर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. ठीक है. Sn माइनस 1, तो 1 माइनस, सपोज यहाँ पे 5 सेकंड में, ये कितना है? 4 सेकंड में, तो 4 सेकंड में थोड़ा कम डिस्टेंस होगा. यस. सो 0 प्लस 1/2 g n माइनस 1 का होल स्क्वायर. इक्वेशन नंबर 2. ठीक है. अब देखो nth सेकंड में बॉडी कवर दिस लेंथ इन nth सेकंड. सो nth सेकंड में डिस्टेंस इज इक्वल टू दिस लेंथ माइनस दिस लेंथ. सो g/2 कॉमन ले लो, n स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर. ओके. g/2 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर प्लस 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 माइनस माइनस, कितना हो जाएगा ये? इसको 1 मिनट देखो. n स्क्वायर माइनस माइनस आपका ये हो जाएगा n स्क्वायर मन प्लस 2n. n माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको क्या होगा? n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर माइनस 2n. तो ये दोनों माइनस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा. n कैंसिल. g/2 2n minus 1. देखो g is the constant, 2 is the constant, तो किसके प्रोपोर्शनल होगा? 2n minus 1. And we know that 2n minus 1 is a odd number. कोई भी वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा? ऑड नंबर आएगा. तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? B is the correct option. This is B is the correct option. ठीक है. कोई डाउट? No. Which of the following velocity time graphs represent uniform motion? Uniform motion. Now we need to understand what is uniform and non-uniform motion. A body cover equal distance in equal interval of time. That means this is in uniform motion. कैसे? अगर सपोज 1 सेकेंड में कोई बॉडी कवर किया 5 मीटर, another 1 second it will cover, sorry, 1 second, 1 minute, another 1 second, 5 meter, and so on.
that means it will follow moving with a uniform motion. ठीक है, अब देखो नॉन यूनिफॉर्म क्या होगा? नॉन यूनिफॉर्म मींस if in first second it will cover 5, in another 1 second this is covers 10 meter. तो क्या होगा? Speed increases, distance cover also increases. Just like if you drop the ball, अगर कोई बॉल को आप ड्रॉप करते हो तो इसकी स्पीड क्यों बढ़ती है? बिकॉज ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी. तो जहां पे एक्सेलरेशन होगा वहां पे क्या होगा? वेलोसिटी की जो स्पीड है बढ़ेगी और जो लेंथ कवर होगा दैट विल आल्सो वेरी इरेज. ठीक है, समझ में आई बात? चलो अब इसमें क्या करना है कि फाइंड आउट करना ए बी सी डी. अब देखो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. इन वेलोसिटी और टाइम ग्राफ स्लोप क्या होता है? जो स्लोप होता है, स्लोप इक्वल्स टू डेल्टा v अपॉन डेल्टा t. दैट मीन्स y डिस्प्लेसमेंट इन y, ये वाली लेंथ डिवाइडेड बाय ये लेंथ क्या होगा? आपका स्लोप होगा. ओके, स्लोप गिव द एक्सेलरेशन. यहाँ पे स्लोप क्या होगा? एक्सेलरेशन. स्लोप इज इंक्रीजिंग हियर, स्लोप इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजेस. तो डिस्टेंस क्या होगा? बहुत ज्यादा कवर करेगा. दैट मीन्स इट इज नॉट द यूनिफॉर्म मोशन. इसको कैंसिल करो. ठीक है, एक और देख लेते हैं. v अपॉन t, हियर द स्लोप इज कांस्टेंट. चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, that is slope, that is acceleration is constant. यहाँ पे acceleration क्या है? Constant. Here acceleration is decreasing, but in this A case number A, देखो क्या हो रहा है? Slope is 0. अगर इस टाइम की बात करो, इस टाइम इंटरवल की, तो यहाँ पर अगर v है तो यहाँ पे भी कितना है? v, बिकॉज y डायरेक्शन में कोई चेंज हुआ है क्या? नहीं ना, नो. तो क्या हो गया? ये डेल्टा v इक्वल्स टू 0, स्लोप इज 0, एक्सेलरेशन इज 0. तो जब एक्सेलरेशन इज 0 दैट मीन बॉडी मूव विद अ कांस्टेंट स्पीड. तो कांस्टेंट स्पीड क्या होगा? कि इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम. तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन. ओके, इसमें भी एक्सेलरेशन है, इसमें भी एक्सेलरेशन है, लेकिन एक्सेलरेशन इंक्रीजिंग, एक्सेलरेशन कांस्टेंट. ये वाली हम लोग फॉलो नहीं करते हैं इक्वेशन मोशन में, बिकॉज एक्सेलरेशन इज वेरिएबल. कैसे पता चल रहा है? बिकॉज स्लोप इज आल्सो वेरिएबल. स्लोप इंक्रीजिंग, दैट मींस एक्सेलरेशन इज इंक्रीज. ओके, ठीक है. अब देखो एक और क्वेश्चन देखो आप. The distance traveled by a particle is related to t x equals to 4t square. Okay, the distance traveled by a particle is related to time t as x equals to 4t square. ठीक है, the velocity of the particle at t equals to 5 seconds. समझ में आई बात? वेलोसिटी क्या होता है? अगर when we talk about differential, so velocity is dx upon dt. एवरेज की बात करें तो डेल्टा x अपॉन डेल्टा t. ठीक है, बट यहां पे हमें क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंशियल. व्हाई? दिस इज गिवन इन टर्म ऑफ x and t. So differentiate velocity equals to d upon dx 4t square. 4 is the constant, बाहर कर लो इसको. वेरी सिंपल डिफरेंशिएशन. 2t
एक फॉर्मूला होता है दैट इज d अपॉन डी एक्स एक्स टू द पावर n, ये लिख सकते हो आप n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1। यह याद रखना, बहुत आपका हेल्पफुल होगा, ठीक है। एक्स इंटू n इंटू एक्स पे n माइनस 1, ठीक है। अब देखो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, 8 इंटू टी, velocity at t equals to 5 seconds, velocity at t equals to 5 seconds, so put the here 8 into 5, that is 40 meter per second, 40 मीटर पर सेकेंड, ये आपका हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। कोई प्रॉब्लम है? नो। सो कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। A fresh question, a body is released from the top of the tower, कोई top of the tower, ये suppose tower है, of height h meter, capital h meter, after 2 seconds it is stopped and then instantaneously released। अगर यहाँ u equals to 0 से स्टार्ट किया, 2 सेकेंड बाद क्या किया, स्टॉप किया एंड देन अगेन रिलीज, सो यहाँ पे भी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। ये एक लेंथ हो गया। व्हाट विल बी द हाइट आफ्टर नेक्स्ट 2 सेकेंड, ठीक है, ये 2 सेकेंड और ये भी 2 सेकेंड, ये भी 2 सेकेंड, 2 सेकेंड 2 सेकेंड, ठीक है। तो व्हाट विल बी द हाइट, व्हाट विल बी द हाइट, ओके। अब देखो स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, तो क्या हो जाएगा आपका, सपोज दिस इज h, h इक्वल्स टू ut, u is 0, t is 0, t, so ut is 0 plus half g, फ्री फॉल है तो g, t is 2 सेकेंड, so 2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2 इंटू 10 इंटू 4, 2 5 कितना हो जाएगा, 20 मीटर, h इक्वल्स टू 20 मीटर, 20 मीटर। अगेन स्टॉप कर दिया यहाँ पे, जैसे ही स्टॉप किया वेलोसिटी हो गई 0, ठीक है। सेम फॉलो दिस वन 2 सेकेंड, तो सेम कैलकुलेशन h इक्वल्स टू हाफ इंटू 10 इंटू 2 स्क्वायर, कैलकुलेट करोगे ये भी 20 मीटर, टोटल कितना हो गया 40 मीटर, टोटल हाइट इज 40 मीटर। बट हाइट तो यहाँ से मेजर करते हैं फ्रॉम द ग्राउंड, तो कितना हो जाएगा h minus 40, this length, this height will be h minus 40, h minus 40, your answer is D। Here you can see D is the, you can see D is the correct option, ठीक है। Okay, so this is all about today classes. We have lot of questions, we will discuss later, okay। If you have any doubt, you can raise your doubt, you can ask me, okay। Otherwise we conclude this session, हम यहाँ पे इस क्लास को बंद करते हैं, देख, and again we will meet in the next class। Please take care and bye, thank you।